देडियापाड़ा से ये खबर सामने आ रही है, जहां के तालुका मथक पर एक बैठक का आयोजन हुआ था। दरअसल देडियापाड़ा के तालुका मथक पर एटीवीटी की बैठक मिली थी, जिस दौरान देडियापाड़ा और सागबारा के प्रमुख, प्रांत अधिकारी और साथ ही आपके विधायक चैतर वसावा मौजूद रहे थे। इन सभी के अलावा इस बैठक में किसी को भी मौजूद रहने की अनुमति नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी देडियापाड़ा और सागबारा की ओर से और तीन लोग भी वहां पर मौजूद थे। इस पर विधायक चैतर वसावा ने विरोध जताया गया था और मामला थोड़ा सा उग्र हो गया था। तब जनप्रतिनिधियों के बीच में तू मैं हो गई थी और मामले ने बड़ा स्वरूप इख्तियार कर लिया था। तब इस घटना के मद्देनजर देडियापाड़ा के पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा पहुंचे थे, लेकिन उस दौरान पुलिस की ओर से आपके विधायक चैतर वसावा को पुलिस थाने से बाहर जाने से रोक लिया गया, जिसकी वजह से उनके समर्थकों में बेहद ही रोष देखने मिला और उनके समर्थकों की ओर से इस मामले में पुरजोर विरोध पुलिस थाने में खड़े रहकर दिखाया गया। आज देडियापाड़ा सागबाराना धारासभ्य आदरणीय चैतरभाई वसावा साहेब અને આજે દેડિયાપાડા તાલુકાનું એટીવીટીનું આયોજન હતું। તેમાં દેડિયાપાડાના પ્રમુખશ્રી અને સાગબારાના પ્રમુખશ્રી અને પ્રાંત અધિકારી અને એમએલએ સાહેબ કમિટીમાં એટલા જ જણાવે તે છતાંય આ લોકોએ બીજા દેડિયાપાડા તાલુકાના 3 નામો અને સાગબારા તાલુકાના 3 નામો અને બંને તાલુકાની 1.5 કરોડ જેટલી ગ્રાન્ટ થાય છે, પણ બીજા બહારના વ્યક્તિઓને જ્યારે ચૈતરભાઈ વસાવાએ વિરોધ કર્યો કે આ કમિટીમાં આ સભ્ય આવે નહીં, પરંતુ એમાં થોડું બોલવાનું થયું અને ઝપાઝપી થઈ। તેમાં ચૈતરભાઈ વસાવા સાહેબને અત્યારે ચૈતરભાઈ ફરિયાદ આપવા આવ્યા અને ત્યાંથી અત્યારે પોલીસ સ્ટેશનથી બહાર નીકળવા નથી દેતા। હજુ સામેની પાર્ટીએ ફરિયાદ હજુ આપી નથી, પરંતુ આ નર્મદા જિલ્લાની પોલીસ જે તાનાશાહી પોલીસ અત્યારે એમનું રૂપરંગ દેખાડવાનું ચાલુ કર્યું છે। એના માટે અમે કાર્યકરો સૌ ભેગા થયેલા છે અને સમાજને પણ આહવાન કરીએ છીએ કે દરેક વ્યક્તિઓ આગેવાનો દેડિયાપાડા પહોંचे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।